We'll start solving our problems. This is question number 1 of this question is this question is this first question is, so we'll go for the example number 8.2. so we have to understand this example first. well पहले हमें इसको पढ़ना अच्छे तरीके से. एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज. so frequency is this is 25 megahertz. So mega means 10 to the power 6. This is 25 cross 10 to the power 6 hertz. Okay, so it's travel in free space along x direction. So electromagnetic waves is moving along x direction. This is very important. Direction of propagation of the wave. देखिए वेव कुछ इस तरीके से चलती है, इस तरीके से. So all these three are in this direction. So wave is propagating along x-axis, and electric field is along bi-direction. So electric field is along bi-direction. Then naturally magnetic field will now be in the z direction. This is how the electromagnetic waves propagate. So he says at a particular point in space and time, we know that electromagnetic waves vary with space and time. So electric field is 6.3 J volt per meter. These are the units of electric field and it is in SI units. So what is V? ये आपको निकालना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि magnetic field is asked to calculate. You are asked to calculate the magnetic field at this point. एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की है, उस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज solution is see, we know that C is equal to E upon V. So B is equal to E upon C, right? So you can write now this as electric field is 6.3. This is the direction. No, I cannot write it like this. मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. 6.3 upon 3 cross 10 to the power 8 meter per second. This is volt by meter. अब इसको काट दीजिए. This is 2.1 cross 10 to the minus 8. 2.1 cross 10 to the power minus 8 Tesla. Alright. So this is the magnitude of magnetic field. So हमसे पूछा गया कि आप उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए. But this magnetic field is a vector quantity, so it has magnitude and direction, right? So अब सवाल ये है कि electric field is in the bi direction. J cap shows that, देखिए हम इस सवाल को प्रोसीड कैसे करेंगे. J cap shows that electric field points in positive bi direction, and the electromagnetic waves is traveling along x direction. The question is the magnetic field which is perpendicular to the electric field and the directional propagation of the wave. So there are two possibilities. It can go in the negative bidirection or it can go to the positive bidirection. Sorry, it can go to the negative z direction or it can go to the positive z direction, because negative z direction is also perpendicular to y-axis, negative z direction is also perpendicular to x-axis. The question is, you have to select either minus z-axis or either plus z-axis will be the answer of the question. Okay, so now how to answer now this question? So see carefully. हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का आना चाहिए कि E क्रॉस B यदि हम कैलकुलेट करें, this is E vector
cross B vector, it should point along x डायरेक्शन. इसका डायरेक्शन जो x एक्सिस की ओर होना चाहिए. So as this is j cap, okay, cross unknown vector, this is the direction of electromagnetic wave is I cap. Okay, so we know that हमने आपको ये पहले पढ़ाया है I, J and K. I cross J is equal to K. I cross J is equal to K. Then J cross K. This J cross K is equal to I. Right? And third is K cross I is equal to J. So यहाँ आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड J डायरेक्शन में है, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव K डायरेक्शन में होना चाहिए. दिस मीन्स दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड, thus you can write, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगा that is B vector is equal to 2.1 cross 10 to the power minus 8 K cap Tesla होगा. This points in positive z direction. This points in positive z direction. You need not to write it like this. Okay. So this is all about this example 8.2. So we will now go for another example. This is so we'll add firstly we will add the question. We'll search the question. This question is okay. So this is all about this question. First we'll go for the question. The question is magnetic field in the plane electromagnetic wave is given by, ये magnetic field का expression है. This is the expression for magnetic field. This is B by, हम यहाँ इसको लिख देते हैं तो आपको ज़रा आसानी रहेगी. Okay, magnetic field that points in bi direction is equal to 2 cross 10 to the power minus 7. ये B0 का वैल्यू हो गया. And इतने Tesla, this much Tesla, it should point at the end sine 0.5 cross 10 to the power 3 x plus 1.5 cross 10 to the power 11 times t, this much Tesla. These are the units, SI units of magnetic field. हमसे पूछा गया है बट इज़ द वेव लेंथ. आपको निकालना है कि वेव लेंथ क्या है. अनडिटरमिन्ड पार्ट जो है दिस वेव लेंथ, इसको निकालना है आपने. दूसरा आपने निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये भी आपके लिए अननोन होगा. राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है. तो 3 पार्ट आपको इसमें से करने के लिए. हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो अगला का पैंतरा होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. हम कलर बदल के देखते हैं आप कैसा सुंदर किसके साथ दिखता है, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं नो. सो दिस इज बी बाय. सो बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं पहले पार्ट को निकालने के लिए. बाय यूजिंग B by magnetic field along bidirection is, this is B0 sine of, this is kx plus omega t, this is kx plus omega t, right. So आप कंपेयर करिए यहाँ. So k is equal to, that is propagation constant. So this is our wave vector k, that is equal to 2 pi by lambda. It is equal to 0.5 cross 10 to the power 3.
So from here on you can calculate lambda. So implies that lambda is equal to 2 pi upon 0.5 cross 10 to the power 3. So lambda is equal to 2 cross 3.14 over 0.5 cross 10 to the power minus 3. So you can solve this is 20 by 5 cross 3.14 cross 10 to the power minus 3. This is 4. After solving it, you will find it 1.26 centimeter. 1.26 centimeter. Okay. So this is the first part of your answer. This is the first part of your answer. And then frequency. One thing more is asked from you. The frequency is, so you know that omega is equal to 2 pi nu. So this part is omega. So this means this part is omega. So omega is 1.5 cross 10 to the power 11 upon 2 pi. 2 cross 3.14 is the frequency that is asked from you. Okay. So if you will solve it, you are +2 student, you can solve this mathematical calculation. This is 23.9 gigahertz. I don't think you will find any difficulty over here. And then another part of the question is, we'll try to finish this problem in the one page. So now you are asked to find the electric field. So before finding electric field is a part B part, उसके लिए हमें E0 निकालना पड़ेगा. So we know that E0 is equal to C into B0. Okay. So E0 is what is B0? So B0 is this part, 2 cross 10 to the power minus 7. This part is B0. See here, this part is B0. This part is B0. Okay. 2 cross 10 to the power minus 7 Tesla. Cross velocity of light 3 cross 10 to the power 8 meter per second. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, you will find that this is a 60 volt per meter. So as you know that this magnetic field is along bi-direction, and electromagnetic waves is propagating along this x direction. देखिए यहाँ से देखिए आप, this is propagating along x direction, right? So what does this mean? This means that electric field is along z direction. So मैं सीधा यहाँ से लिख सकता हूँ, this is electric field will point in z direction and both are in resonance. So आपको ये वाला पार्ट तो फिर फिक्स रहेगा. तो ये आपके पास आ जाएगा E0. This is E0 sin of, this is kx plus omega t ही रहेगा. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, this is Ez is equal to 60. E0 is 60. This part is 60, and then sin of this part will remain the same. ये वाला पार्ट बाकी सेम ऐसे लिख दीजिए आप. This is 0.5 cross 10 to the power 3x plus 1.5 cross 10 to the power 11 t. Okay. So this is the final expression for this numerical problem, and this is what is asked from us. So now we'll go for example number 8.4. So now we'll go for another example, that is we will initially we will add the problem and then we will go for it. So the problem is
So this problem is very simple for us to do it. ये आसान सा एक सवाल होगा, वह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा। तो हमारा पहला ड्यूटी ये है कि हम इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ें। तो इसमें कहा गया है कि एक लाइट विद एनर्जी फ्लक्स, इसको ध्यान से देखें आप। दिस इज़ द न्यू टर्म फॉर यू, इट्स एनर्जी फ्लक्स। और इसका जो डेफिनेशन है वो इस पार्ट से पता चल जाता है कि एनर्जी फ्लक्स क्या होता है। दिस इज एनर्जी अपॉन टाइम, वाट इज एनर्जी अपॉन टाइम एंड इनटू एरिया। सो ये यूनिट जो है वो एनर्जी फ्लक्स के जो यूनिट हैं वो इंटेंसिटी के हैं। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ है अभी, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये इंटेंसिटी है बेसिकली, राइट। दिस इज फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये सारी लाइट को अब्जॉर्व कर लेता है एट ए नॉर्मल इंसिडेंस। इफ द सरफेस हैज़ एन एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ए। अब आपके पास दिया है एनर्जी फ्लक्स, पहले लिख लेते हैं। पहले आप लिख लीजिए एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स जो है मीन्स एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू 18 वाट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हम इसको यूनिट्स की हेल्प से कर देंगे। एंड फाइंड द एवरेज फोर्स आपको निकालना है। दिस इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट ऑफ टाइम स्पेन। 30 मिनट में आपको एवरेज फोर्स एक्सर्टेड निकालना है। तो आई थिंक यू विल फाइंड इट सो वेरी इजी टू डू इट। आपके पास एरिया दिया है, नोन पैरामीटर्स को तो आप पहले लिख लें। दिस इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो टाइम स्पैन है हमारे पास, जो टाइम स्पैन है, टाइम स्पैन इज़ 30 मिनट। 30 मिनट मीन्स 1 मिनट इज़ 60 सेकेंड। ओके, दिस इज़ 1800 सेकेंड्स। ओके, सो जो एनर्जी फ्लक्स है हमने जो निकालना है वो आपको पहले एवरेज फोर्स निकालना है ना। तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा वो होगा मोमेंटम अपॉन टाइम, और मोमेंटम होगा एनर्जी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमें एनर्जी निकालना है। हमारे पास आएगा एनर्जी जो निकालना है, एनर्जी से हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम आ जाएगा u अपॉन सी, और मोमेंटम से आ जाएगा फोर्स, दैट इज़ p अपॉन टी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका रहेगा। ओके, सो एनर्जी फ्लक्स से सबसे पहले हम एनर्जी निकालते हैं। आप यहाँ देखिए, आपको यदि एनर्जी निकालना है तो एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा कि ये है हमारे पास 18 वॉट, राइट, वॉट डिवाइड बाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो 20 सेंटीमीटर एरिया के लिए कितना हो जाएगा ये, आपको इसको जॉल के यूनिट में लेके जाना है ना। तो पहले आप इसको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अब अगले स्टेप में मैं साथ साथ में ये भी बताता हूँ। आपको चाहिए यूनिट जाउल। दिस इज वाट इज जाउल बाई सेकेंड इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 1 सेकेंड। यदि मैं पूरे टाइम स्पैन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, टाइम स्पैन इज 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड। देखिए ज़रा आपके पास क्या बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकेंड के साथ सेकेंड कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद जाउल। तो ये एनर्जी हो जाएगी ना। दिस एनर्जी यदि इसको आप सॉल्व करते हो, दिस इज फाउंड टू बी 6.48 क्रॉस 10⁵ जाउल। अब आगे देख लीजिए चीज़ें कितनी आसान है। एनर्जी निकाल ली आपने, इस एनर्जी से अब आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू यू अपॉन सी। और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो सरफेस है वो परफेक्टली नॉन रिफ्लेक्टिंग है। मींस इसमें सारी की सारा जो रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। यदि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो इसका मोमेंटम टू यू अपॉन सी आता। ये ध्यान रखना है आपने। सो देयरफॉर टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड फॉर कंप्लीट अब्जॉर्प्शन इज total momentum delivered for complete absorption is
फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इज, तो मोमेंटम क्या होगा, दिस एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज 6.48 क्रॉस 10⁵ joule अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, दिस इज 2.16 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम, ये मास हो गया, मीटर बाय सेकेंड, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, राइट। अब आपको निकालना, देखिए आप यहाँ से आप यहाँ पहुँचे, अब आप यहाँ से यहाँ कंफर्टेबली पहुँच जाएंगे। नाउ द एवरेज फोर्स exerted on the surface is, the average force exerted on the surface is, force is equal to momentum upon time span. So momentum कितना आया, this is 2.6 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और टाइम स्पैन कितना है, दिस इज 1800 सेकेंड, दिस इज 1800 सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है ये 1.2 क्रॉस 10⁻⁻6 मीटर। तो हम आपको इसलिए आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आप +2 का स्टूडेंट हैं, आप एक जनरल कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट these problems, and now we'll shift our discussion to the example 8.5. okay, next question is, so we will now go for another part. Next question is, so now next question is, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8.5। सो हमारा काम है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम क्या करेंगे। कहते हैं कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही कैलकुलेट करना है। और इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, एक रेडिएशन, वो जो एक सोर्स से आ रही है, और सोर्स जो है वो 100 वाट का बल्ब है, राइट। और आपसे कितनी दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर है, क्योंकि स्पेस और टाइम का फंक्शन है और हर पॉइंट पर वो बदलता चला जाता है। तो इस 100 वाट बल्ब है और 3 मीटर की दूरी पर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। इसमें आपने एज्यूम करना है कि जो बल्ब की एफिशिएंसी है वो 2.5% है। सो एंड इट इज़ ए पॉइंट सोर्स, वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वो रॉड नहीं है जैसे ट्यूब लाइट होती है या टीवी से जो वेव्स आती हैं, वो इस तरीके का नहीं है। ओके, so now we'll first starting with the known parameters. So the power of the bulb is, this power is 100 watt, right, power is 100 watt, and the distance is, this distance is 3 meter, and the efficiency neta is 2.5%, and the bulb is a point source, the is produced by this bulb as a, bulb is a point source, the bulb is a point source, जो आपका बल्ब है वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, राइट। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो सरफेस एरिया सराउंडिंग द स्फेयर, 3 सेंटीमीटर के जो 3 मीटर के दायरे में एरिया कितना होगा, एरिया जो होगा उसका फार्मूला रहेगा 4πd², 4πr², राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा 4 क्रॉस 3.14 इंटू डी इज़ 3 मीटर, इसका स्क्वायर तो आ जाएगा 3 3 9, 9 चौके 36, 36 गुणा 3, 108 के आसपास आना चाहिए। दिस इज़ नियरली
113 मीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया। ओके, अब इससे हम क्या करेंगे, द इंटेंसिटी एट दिस डिस्टेंस इज द इंटेंसिटी at this distance is अब आपको इंटेंसिटी को समझना है। सबसे पहले जो इंटेंसिटी होती है इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, दिस इज एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। okay, so the energy upon time is power upon area, this is power upon area। okay, so the power of the bulb is 100 watt, right? Area is 113 meter square, and then efficiency of the bulb is 2.5%, right? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज 100 अपॉन 113, 2.5 का आप ले सकते हैं 25/10 पर सेंट, पर मीन्स डैश, सेंट मीन 100। इसको हम सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा, इस 100 से 100 चला जाएगा, and if you will solve this part then this is equal to 0.022 watt per meter square। okay, this is the intensity of light। अब इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, हाफ पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और हाफ पार्ट तो है जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो इंटेंसिटी, द हाफ पार्ट ऑफ दिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज 1/2, और ये आपने पहले पढ़ा एक्सप्रेशन एप्सिलॉन 0 c टाइम, this is root mean square value of electric field। so from here on you can calculate E root mean square value। so intensity is 0.022 is equal to divided by epsilon 0 times c square root, it is equal to E root mean square value, oh sorry, root mean square। okay, now this epsilon 0 इसका हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, E root mean square value is equal to square root of 0.022 divided by epsilon 0 is 8.85 cross 10 to the power minus 12 into 3 cross 10 to the power 8 meter per second। if you will solve this part you will find that this is 2.9 volt per meter। okay, so the value of E found above is the root mean square value of the electric field। this value is the root mean square value of the electric field, and because electric field in the light beam ये जो sinusoidal होगा और इसकी जो peak value होगी, the peak value of electric field is √2 times root mean square value of electric field। so this is √2, that is 1.41, this is 1.41 cross 2.9 volt per meter, so this is equal to 4.07 volt per meter। alright, so this is all about the maximum value of the electric field at this point। so now let us calculate the strength of magnetic field। the next part is, now let us calculate the strength of magnetic field। magnetic field is, तो क्या हो जाएगा, B root mean square value of magnetic field is root mean square value of electric field divided by C। okay, so which is 2.9 volt per meter upon 3 cross
10 to the power 8 meter per second. So this is equal to 9.6 cross 10 to the power minus 9 Tesla. All right. Then the peak value of magnetic field is B0 is equal to under root 2 times root means square value of the magnetic field. So this is under root 2 times 9.6 cross 10 to the power minus 9 Tesla. So which is equal to 1.4 cross 10 to the power minus 8 Tesla. Right. So this is what is asked from us. So this is all about this numerical part of this text. And if you do have any problem, any question, you can write in the comment box. Thank you.